And never again in my life am I choosing people who do not choose me. I am problematic. I am not a good person. मेरे बहुत सारे notions बन गए थे life में that showed up in my dating life when things don't go my way. The fit that I threw this year. Why do I have to be such a drama queen? So after a while I'm doing one of those real talks, heart to heart chats on this channel. जो बातें मुझे तुमसे करने में बड़ा मजा आता है and I hope you guys enjoy this too. I know a couple of y'all do. That's why come and open my heart up for you guys here every now and then. मैं करने वाली one of those videos जो मैं पिछले काफी सालों से करती आ रही हूँ. I do like a look back where I sit and reflect on the year gone by, because by now you should know that reflecting is one of my favorite things to do, to sit and reflect on things that have happened और उसमें से मैं क्या draw कर सकती हूँ, कोई lesson, कोई learning. आज ये वीडियो शूट करने के पहले I've sat very calmly in my room for 1 hour एंड मैंने बैठ के पूरे साल के बारे में सोचा एंड आई हैव रिटन डाउन जो मेरे मेजर लाइक यू नो टेक अवेज थे इस साल से, एंड आई हैव कम टू 7 लर्निंग्स और 7 थिंग्स दैट 2022 हैज टॉट मी. So, you know, before I move to what my learnings have been, एक recap कर लेती हूँ 2022 का. So if I have to speak overall about the year, 2022 was me living a lot of my prayers. पता नहीं तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या नहीं, मैंने वहां पर बहुत बार स्टोरीज में भी बोला है, पोस्ट किया है, पोस्ट में लिखा है, बट एवरी टाइम वो चीज होती थी और मैं उसे रियलाइज करती थी कि शिट यार ये हो रहा है. लाइक यू नो फ्यू मंथ्स अगो हम लोग प्रे कर रहे थे, हम लोग एज एन मी आई वाज प्रेइंग कि प्लीज मेक दिस हैपन फॉर मी एंड इट्स हैपनिंग, एंड एवरी टाइम मुझे वो रियलाइजेशन हुआ. आई हैव शेड अ टीयर, आई हैव हैड गूज बम्प्स. बहुत अच्छे वाले मोमेंट्स मुझे 2022 में यू नो एंजॉय करने को मिले हैं. गेटिंग अ लॉट ऑफ फैमिली टाइम. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पोस्ट किया था कि यू नो जब मेरा भाई कनाडा चला गया था एंड माई डैड इज टू बी इन पुणे एंड वी वर हियर एंड कोविड हैपेंड, मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी और मुझे ऐसे अंदर से एक डर लगता था. दिस वाज वन ऑफ माई biggest fears that my time with my entire family together was that's all that it was 2018 तक. इसके बाद पता नहीं when will he come, पता नहीं if you all will be able to, like I had a lot of fears about not having enough family time, and then he came back this year from Canada and the whole of this year touch would have gotten to spend so much time with my family. और family के अलावा friends के साथ भी मुझे इस साल बहुत quality time बिताने का समय मिला. friends के साथ बहुत सारा socialization करने का socializing करने का time मिला. I had the opportunity to strengthen, you know, some of my friendships and bonds with my friends, which was amazing. And talking about things जो मेरे हिसाब से नहीं हुई. So, इस साल मैं actually कुछ चीजें manifest करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है. I have quite consistently been in the practice of manifestation and few things in my personal life, professional life. अभी I don't want to get into the details of it. उनको time लग रहा था होने के लिए, but I was like नहीं हो जाएगी, you know. Let me just be patient. It'll happen. 2 months, 3 months, 5 months, 6 months passed. और जब टाइम बीतता गया और वो चीज नहीं हो रही थी, देन सडनली मेरे अंदर से लाइक आई एम वेरी पेशेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर दैट जब वो फूट जाता है देन आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी इरिटेबल, अनॉयड, इम्पेशेंट. आई एम लाइक ये कब होगा. देन ऑब्वियसली एक चीज होती है व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग थिंग्स, देन यू आर लाइक शुड आई जस्ट गिव अप ऑन दिस, व्हाट एम आई इवन वेटिंग फॉर. बट देख एक इंटरनल आवाज आती रहती कि क्या you'll give up so easily, no you should stick to it. These few things that weren't happening made me so frustrated this year. And I saw that I do not take well when things don't go my way. The fit that I threw this year, जो मैंने weight put on किया, it was all because of the emotional eating, because I threw a fit कि नहीं मैं करूंगी नहीं जब तक ये होता नहीं. I did that. मैंने अपना पूरा routine disturb कर दिया. I was just waiting for something to happen, only then I'll do something else. But you know what? If I have to look back on this year from the point of view of personal growth, I have had an amazing year in terms of personal growth. Huge mindset shifts have happened to me this year. मुझे लगता है एक तरह से जो भी चीजें हुई है इस साल, in a way they have laid this strong foundation for my spiritual journey ahead. And apart from that, I built some very serious and deep self-love practices this year, which I'm so proud of. Now coming to the 7 things that I learned this year. Number 1, manifestation is real. Oh my god guys, I have to tell you all, मैंने इतना doubt किया ना manifestation को. So this is one thing that I have known since I was 16 years of age. मैंने इसको trial and error किया है. मेरी पर्सनैलिटी का ट्रेट है एक्चुअली. डाउटिंग इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. आई डाउट एवरीथिंग. आई हैव टू डू माई ओन रिसर्च अबाउट एवरीथिंग. यू नो आई वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट थिंग्स. दैट्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. बट इस साल ने मुझे प्रूव करके दिखाया कि मैनिफेस्टेशन इज रियल एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस. ऑल यू नीड टू डू इज सिंपल लिटिल थिंग्स. कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई रिचुअल्स तुम्हें हैवी फंडू करने की जरूरत नहीं. इट्स एज सिंपल एज जस्ट आस्किंग द यूनिवर्स फॉर वॉट यू वॉन्ट. इट्स एज सिंपल एज जस्ट
sitting and praying in front of God, or it's as simple as writing something in your journal saying I want this, that's it. और मुझे इतने बड़े बड़े manifestations के proof मिले हैं ना इस साल, इनके videos मैं कर चुकी हूँ, like I've said, maybe I'll link some इसके नीचे या ऊपर कहीं, but even few things that I feared that could never happen happened for me, and that just deepened my faith in the whole concept of manifestation. Second learning, huge one, that the only person that's blocking me from where I want to go ahead in life is me, myself and nobody else. बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते लाइफ में, हमारी कुछ चीजें नहीं हुई होती है जो हमने प्लान की होती है, इट्स वेरी क्विक एंड ईजी टू ब्लेम सर्कमस्टांसेस. ओ माय पेरेंट्स नेवर लेट मी डू दिस, ओ नो माय मार्क्स वर इनफ, मुझे यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन ही नहीं मिलती, और व्हाटएवर. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, अदर पीपल. मैंने ये अपने लाइफ में पाया इस साल की the only reason मैं इतने टाइम से 25,000 सब्सक्राइबर्स पर स्टक हुआ, and this is like one of those, you know, deep honest truths that you tell yourself that you have to accept. The only reason that I'm stuck at 25,000 subscribers is not because I don't have a team. I keep cribbing कि मेरे पास टीम नहीं है, टीम नहीं है, मेरा मुझे अपना कंटेंट का क्वालिटी इंप्रूव करना है, मेरा प्रोडक्शन वैल्यू हाई नहीं है, यूट्यूब एल्गोरिदम, none of this is to blame. The only thing is to blame is my own self doubt, and I realized that this year that self doubt is such a huge थीम इन माई लाइफ. मैंने इतना डाउट किया है मेरा खुद का कंटेंट. तुम लोगों के साथ बार बार मैंने वीडियोस में आकर इसके बारे में डिस्कस किया है, स्पेशली व्हेन यू गाइज वर लविंग ऑल माय आउटफिट वीडियोस, मेकअप वीडियोस जो मैं 2-3 साल पहले लॉकडाउन के वक्त करती थी, और तुम लोग कितना मुझे कहते थे डू मोर ऑफ दोस, बट आई वाज़न्ट डूइंग मोर ऑफ दोस बिकॉज आई हैड सो मेनी डिफरेंट नोशंस अबाउट इट एक्चुअली व्हिच वर नॉट वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आई वाज लाइक, is that all that I have to offer to the world? That that I dress well and I can shop well and I can maybe do thoda bahut decent makeup now, not back then. I used to think that I have so much more to offer. ये सारी चीजें कितनी वेन है, इसके अलावा भी तो चीजें हैं जिंदगी में. So this was my mindset, and I think this mindset came to bite me in my own ass because I should have dived into it 100% without doubt and just created constant content back to back about it. I did not, and I realized that has somewhere kept me where I am. Next one, oh my god, I've said this so many times on this channel only, which is people who are meant to stay in your life will find their way back to you no matter what in caps. और मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ दूसरे वीडियोस में इस चैनल पे, and this year has given me such a huge example of this belief, जो actually I believe in it with every cell of my being. So this year was in a way a year of reconciliation of sorts or reunion of sorts. मैंने काफी सारे लोगों के साथ reconnect किया, people from my past who I had lost touch with. So this includes a very close girlfriend from Nagpur, जिससे मैं 7-8 साल से हम लोग टच में नहीं थे. उसके बाद हम लोग we got in touch again and I hung out with her when I was in Nagpur this year. Apart from that, 2 exes, one of my ex जो मेरा school time boyfriend था, like जब मैंने मेरा school vlog post किया, that time he got in touch with me. I posted all this on my Instagram by the way. बहुत सारे सालों बाद हम लोगों ने बात की, और वो भी एक रिकनेक्टिंग ऑफ सॉर्ट्स, काफी अच्छा था, काफी हार्टफेल्ट था, काफी सिंसियर था. एंड देन अनदर वन विच वाज द सिग्निफिकेंट वन फॉर मी was me getting back in touch with this ex, which was my last relationship, जो breakup I think कुछ 8 साल पहले हुआ था I think, and that was one of the most bitter breakups of my life. Okay, I've never had something so bad. That was a bad breakup. We said really mean things to each other both ways, things that really pinch you and stay in your heart for a while. और उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया. In my heart somewhere it kept pinching me the whole time, and मुझे लगा नहीं था कभी कुछ ये resolve होगा. Cut to very weirdly we just reconnected this year, and again very weirdly, I mean I don't think any one of us was thinking, we landed on a dinner जहाँ पर we spent a good 3-4 hours with each other and spoke our hearts out about what happened, and I told him about this whole thing, कैसे मुझे अंदर से poke कर रहा था, and he also agreed that he felt the same way, that it kept bothering him also the way things ended. I told him how hurt was I because of it, कैसे उसकी वजह से मेरे बहुत सारे notions बन गए थे लाइफ में, that showed up in my dating life again and again because of that one particular breakup. And then he so honestly from the heart apologized, and in the right way. There are those right apologies that people give you which do not involve any but then this, but then you also said that. There was no if, there was no but, there was just a very honest, true to heart apology, and that just made me realize कि कितना भी कुछ भी हो जाए, people who are meant to stay will find their way back. Okay, next one इसी instance से थोड़ा बहुत related है. It is even in the ugliest of breakups and the ugliest of fights, when people say the most horrible things to you,
about you, even then it's not about you, it's about them. I have said this on this channel before, and ये एक जो lesson है, I have seen it repeating for me over and over again. Clearly I still don't learn. So अगर तुम लोग भी मेरी तरह हो, you know, I was this person, अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ बोलता था, like, you know, people would say mean things to me, anything bad about me, I would quickly take that. You know, I would quickly internalize their criticism of me and take it to my heart. लोग गुस्से में होते, they say a lot of things about you, but you're not supposed to take it. That's what they're saying in that moment, and you're not supposed to accept it. वो मेरे personality का एक weakness था for years. I used to just instantly accept bad things that people would say about me and make it about me. But if you're also like me, it's never about you. भले ही वो कितनी भी you know, ऐसी पिंच करने वाली चीजें बोलते हैं, कितनी भी तीखी चीजें बोलते हैं, कितनी भी चीजें बोलते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होती है तुम्हें सुनने के लिए अपने बारे में, और तुम्हें ये सारी चीजें ना तुम्हारे सबसे क्लोज लोग ही बोल सकते हैं. दे नो वेयर इट हर्ट्स एंड दे pick exactly those points, especially in the fights. And so when people say this to you, try not to take it all. जब मेरा ये breakup जो था, you know, इस ex के साथ ये bitter वाला, when this whole reconciliation happened and when we both spoke at length, उसने भी कुछ चीजें मेरे बारे में बोली थी जो मैंने quickly accept कर ली थी. उसके बाद मेरी कुछ beliefs बन गई थी life में that, you know, maybe I am the problem, I am problematic, I am not a good person to be with, I am a bad person internally. And when we spoke, हमने जब heart to heart बात की, उसने मुझे बोला, of course I did not mean any of those things, I just said it in anger. Of course I have been doing healing work on myself for years, so I in a way gave myself closure in this situation. But you know, इन सब चीजों के बावजूद भी जब तुम्हारा किसी के साथ इस तरह का एक फॉल आउट हुआ है बहुत ही हॉरिबल तरीके का, that person comes and stands in front of you and says to you in your face that, you know, all of that I said to you wasn't about you. I don't know why is that such a big fat validation after all the healing work that you've done, after all everything that you've learned about yourself and about just, you know, relationships. It's easier for me at this point in my life to not make that about me. I know, acha, this is not about me. This is all garbage. This is all garbage that's coming out of that mouth. It's about their state of mind right now. I don't need to accept it. Next one is, oh my God, learning to choose myself over and over and over again and actually be my own go-to person. I feel ये हुआ है because like I said earlier in this video, I have deepened my self-love practices over this year. And मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था to choose myself. By the way, it used to feel very uncomfortable for me. Like if there was a choice between my comfort and what somebody else needs, I would always go and cater to दूसरे लोगों के needs first, and then I would at the end be like, हाँ, now what I need. And like I said, it takes practice. अगर तुम्हें पहले से आदत रही है दूसरों को तुम अपने लाइफ में बहुत प्रायोरिटी देते हो, खुद को सबसे लास्ट में रखते हो, तो ये चेंजेस होने में टाइम लगता है. Especially it becomes very difficult when it comes to choose yourself with your own very close people. भले ही ये तुम्हारे best friends हो या तुम्हारी family हो, or if it's like a lover, girlfriend, boyfriend, partner, क्योंकि एक underlying, you know, एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है, एक सेंस ऑफ लाइक सेल्फिशनेस आता है, एक सेंस ऑफ लाइक सेल्फ जजमेंट आता है, बट यू स्टिल हैव टू गो अहेड एंड डू इट एनीवे. एंड आई एम आल्सो वेरी ग्लैड दैट, यू नो, ओवर द इयर्स आई कैन रियली फील दैट आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस कनेक्शन विद माई सेल्फ, जो मेरे लाइफ के 27-28 साल मिसिंग था, जीरो था. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यूर हैज टू गो रन बिहाइंड फर्स्ट माई बॉयफ्रेंड्स एंड देन माई फ्रेंड्स, एंड आई वॉज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड अदर पीपल, नॉट टेकिंग इनफ टाइम टू सिट विद माई सेल्फ कि यार who am I, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, and trying to understand myself. But deepening and strengthening this relationship with myself has been the most beautiful and fulfilling experiences. Like I can't even explain this to you. Like मैंने वो changes अपने आप में देखे हैं बहुत ही ऑर्गेनिकली होते हुए, यू नो, वेयर इन अ वे आई रिमेंबर कुछ सालों पहले तक आई यूज्ड टू एड्रेस माई सेल्फ सो हार्शली इन माई माइंड. यू नो, कभी कहीं पब्लिक प्लेस में होता है, कुछ हमने गलत कर दिया होता है, यू नो, गूफ अप कर दिया होता है, सपोज ऑफिस स्पेस में, तो वे वी टॉक टू आवरसेल्व्स इन आवर हेड इज सो हार्श. आरती, व्हाट द फक आर यू मैड? दैट्स हाउ आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ. Only this year, my tone of talking to myself has changed drastically. I talk to myself very lovingly. Like I would talk to a small, like a baby. I have a pet name for myself. Sounds very cuckoo, but you have to do these things. पहले I used to address myself so harshly. So yeah, अभी कोई भी goof up होता है, कुछ भी होता है, I falter. I give myself love like I would have given if I had a kid. You know, and I wish ये सारी चीजें हमें कोई हमारे 20s में सिखाता. Like these are such important things in life. Like if you have this strong relationship with yourself, you could have made, like I feel कितने sane decisions ले लेती मैं अपने लाइफ में अभी तक. But खैर, देर आए दुरुस्त आए. And this has also made me realize one more thing, that no matter who comes and goes from my life, I will never leave my own side, and I will always be on my own side, which is so important.
And never again in my life am I choosing people who do not choose me. मैंने ये गलती इतने सालों की है, साल दर साल, not with my blood relatives, okay, with my friends, my inner circle, my close circle, in romantic relationships. I've chosen people who were not choosing me, and I'm just like, I don't think I'm going to do that again. I'm not just in that headspace anymore. Next one is a learning that I'm still learning. I don't know how many more years am I going to take to learn this. Oh my god, surrender, surrender, surrender. Do not micromanage, just surrender. 2022 has been a huge masterclass, in surrendering for me. And can you believe the adamant ass that I am, that मैंने ये लेसन अभी तक नहीं सीखा. लाइक मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है सीखने में यार. मैं पूरी जिंदगी माइक्रो मैनेज करते करते निकाल दिया मैंने. तो जब तुम मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, जो मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं एट द टॉप बात कर रही थी, जो नहीं हुए, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे हैवंट हैपेंड. इफ यू आर लिटिल डीप इनटू मैनिफेस्टेशन, यू वुड नो दिस, दैट यू आर सपोज टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम. यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल एंड मेक थिंग्स हैपन. एंड दिस freaking control freak that I am just can't let go of control. Like I'm constantly checking, हुआ नहीं हुआ, like can I do this, उससे होगा, इससे होगा. हमें क्या लगता है, human beings, हमें लगता है हम लोग बड़े smart है. We think we are very smart asses. We think we have solutions to everything. We can make anything happen. We can think our way out of problems. But then again and again and again, life keeps in front of you situations where you can't think your way through those situations. The only thing you can do in that situation is drop all the control, just surrender to the universe and pray for things to happen, and maybe then they might happen for you. So ये अभी भी ये बहुत ही यार मेरे लिए मुश्किल लेसन रहा है, जो मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ. The day I crack it, of course, I'll come and tell you more about it. But at this moment, I'm still struggling. And the last lesson, and one of the most beautiful lessons that this year has echoed back at me is, see, I'm getting teary-eyed even while saying it, that life always has my back. And why do I have to be such a drama queen? यार एक्चुअली ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके एक दिन पहले, एक रात पहले, आई वॉज कमिंग बैक होम लेट इन द नाइट फ्रॉम दिस get together. I was so happy. I was just looking out of the cab, looking at the sky, and I was just smiling at the sky like a retard at 2:30 in the night. Yeah, this looks like a scene from a movie, but this happened. Just परसों रात की बात है. I was just coming back home feeling so happy and grateful from inside, जो मैं तुम्हें explain नहीं कर सकती. So to give you the context, कुछ महीने पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था about breakups with friends. You know what happens when you fall apart with your closest friends. मैंने बड़े openly बात की इस चैनल पर about falling apart from two of my closest friends that happened in 2020. और तब मैं ना बहुत कंफ्यूज फील करती थी इस सिचुएशन के बारे में. लाइक व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट हैपेंड, एंड आई टू फील सो अलोन एंड लोनली बिकॉज आई इन्वेस्ट अ लॉट इन माई इनर सर्कल एंड पीपल इन माई लाइफ, एंड देन फॉर सडनली दोज पीपल दैट यू थॉट विल बी विथ यू फॉर लाइफ disappearing, I questioned a lot of things. I have a lot of friends, but people who will know about the innermost emotions and details about my life will be those select 2, 3, 4 मैक्स. जब वो दो फ्रेंड्स सडनली निकल गए, मुझे से एक वैक्यूम सा फील होता था उस वक्त. बट यू नो, आउट ऑफ नो वेयर, सो ब्यूटिफुली लाइफ फिल्ड दैट वैक्यूम फॉर मी एंड ब्रॉट इन सच ब्यूटिफुल फ्रेंड्स विदाउट मी इवन लुकिंग फॉर देम. और जब मैंने ये रियलाइज किया, लाइक तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम यू जस्ट लिविंग योर लाइफ एंड वन डे यू सडनली रियलाइज दैट oh, how grateful am I to be friends with this person and this person and this person and to be surrounded with these people, and the beauty of it is it happened so organically. So ये exact feeling मुझे अभी परसों की रात आया, and I was like wow man. So now I feel, you know, if your heart is in the right place, if you have good intentions, amazing people with the best intentions for you will find you at any age. तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता. ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे सबसे सच्चे दोस्त वो स्कूल और कॉलेज वाले ही होते हैं, उसके बाद यार दोस्त नहीं बनते हैं, ये सब फॉर्मेलिटी के दोस्त होते हैं 20s और 30s में. आई थिंक दैट्स bullshit. Till very recently my measure, I had this very horrible measure for my friendships and relationships. It used to be time. कि यार मैं किसी को अगर 10 साल से जानती हूँ, 15 साल से, 20 साल से जानती हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो मुझे कैसे भी ट्रीट कर रहा है. बट ये जो 2, 3, 4 साल वाले वो इतने इंपॉर्टेंट है. दैट इज हाउ आई टू ट्रीट माई रिलेशनशिप्स इन जनरल. एंड ओनली रिसेंट ईयर आई रियलाइज दैट्स अ हॉरिबल फकिंग measure. It does not matter how many years you've known somebody. The only thing that should matter is how pure their intentions are about you. You know, if they pray for your success as well and your well-being, and if they want to, you know, be a part of your success and cheer for you as much as you want to cheer for them. This was one beautiful learning for me, कि अगर life takes away one thing from you, it
fills it up very beautifully without you even noticing it and realizing it. And sometimes we fail to give enough gratitude for that. And I wanted to end this video with that beautiful thought. These are the 7 things that I learned in 2022. अगर तुमने भी life में similar emotions कभी ना कभी face किया है, I hope you related to this video in some or the other way. If you did, and if you'd like to support me and my content, please take a second and hit that subscribe button. Did I just do subscribe button? Autopilot पे चल रही हूँ मैं. Hit that like button and subscribe and hit the bell icon अगर तुम्हें future में मुझसे और videos देखने हैं. And I will see you guys real soon. You take care. Bye bye.